हेलो एंड वेलकम बैक टू टुडेज़ वीडियो। आई एम निखिल नाइक एंड आज देखेंगे हम निफ्टी 50 एंड बैग निफ्टी फॉर नेक्स्ट वीक एंड हाउ वी कैन ट्रेड यूजिंग लॉजिक। ओके, सो अगर कल के मार्केट के बारे में डिस्कस करें तो कल काफ़ी अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट था। एंड डोंट वरी इफ़ यू आर सीइंग दिस चार्ट जहाँ पे गैप नहीं है, आई एम यूजिंग अ नो गैप कैंडल इंडिकेटर। सो उसके वजह से क्या होता है कि जितने भी गैप्स होते हैं मार्केट में वो फिल हो जाते हैं। ये जस्ट टू मेक थिंग्स ईजी, हम उसे एज रेफरेंस पॉइंट नहीं लेंगे टू मार्क आवर डिमांड एंड सप्लाई जोन, बिकॉज वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। द रीज़न बिहाइंड इज, एक एग्जांपल अगर मैं शो करूँ तो इफ़ आई प्लेस दिस 1 hour टाइम फ्रेम, ओके, तो इफ़ आई एम यूजिंग जस्ट एज एन इंडिकेटर तो दिस एरिया shows me as a supply zone if you know about the breakout structure. But अगर I use the normal chart जो डिफ़ॉल्ट प्लॉट है, देर इज़ नो सप्लाई एरिया देयर। ओके, जस्ट अ कॉमन सेंस, मतलब इतना कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है वो, बट हाँ, इफ़ यू आर यूजिंग दिस इंडिकेटर कंसिडर दिस एज की ऐसे बहुत सारे फेक सप्लाई एंड डिमांड जोन आपको शो किए जाएंगे जो हमें कंसिडर नहीं करना है। वी हैव टू लुक फॉर लिक्विडिटी एरियाज एंड सच things. Another thing is key, if you are consider if you trade imbalance or fair value gap, तो गैप अप्स एंड गैप डाउन्स को वो एज अ फेयर वैल्यू और इम्बैलेंस कंसिडर करेगा, बट वी हैव अ डिफरेंट वे ऑफ ट्रेडिंग गैप्स। सो यस, ओके, सो यस, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। सो कल का इफ़ वी सी मार्केट काफ़ी ट्रेंडिंग मार्केट था। सिंपल, वी हैव accumulation phase, we were in a accumulation phase, market काफ़ी अच्छे से accumulate किया, we had a liquidity sweep, then a change of character, this give us a sign कि वो प्राइस ऑप्टिमल ट्रेड एंट्रीज पे आया है, विच इज़ आवर गोल्डन रेशियो ऑफ फिबोनाची। एंड when yesterday market closed, sorry, opened above this breakers block, we took an entry on a 5 minute time frame, a simple retest here, and then the trend continued. मैंने डिस्कॉर्ड चैनल पे भी पोस्ट किया था कि आई विल टारगेट दिस 1 hour imbalance और buy side liquidity. Okay, now we haven't closed above the buy side liquidity. Okay, or what I am expecting for market to do. First of all, अगर ये 1 hour का डिमांड एरिया मार्केट होल्ड करता है विच इज़ 17,570 और 17,550, वी कैन कंटिन्यू ट्रेड टूवर्ड्स द बाय साइड। ओके, जितने भी ऊपर टारगेट्स है उसको हम हर 100 पॉइंट्स, हर 150 पॉइंट्स यू कैन सेट योर टारगेट्स। बट if we break this 1 hour demand zone, if you break this 1 hour demand zone, if you have a change of character, shift in market structure, I will look for short sell. Okay, but full ये zone तक नहीं। okay, I will use discount and premium price जहाँ पे I will exit my trade at discount prices. I will look for fresh long at 17,400, 17,470। अगर वो डिमांड होल्ड नहीं करता एंड इफ प्राइस जस्ट सिंपली स्विप लिक्विडिटी, वो ऑब्वियसली जब भी प्राइस फॉर्म होगा उसके बाद ही हमें समझेगा व्हाट वी हैव टू डू। बट येस, एक अच्छे से ब्रेकआउट के बाद if price wants to continue going down or going up, it has to first come down. अगर decent pullback ये करना है, इनिशिएट हो रहा है मार्केट, तो इट हैज़ ऑलरेडी गिवन अस अ साइन की चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम, बट 1 hour टाइम फ्रेम के बेसिस पे आई विल सी स्टिल वेट फॉर दिस डिमांड टू होल्ड, बिकॉज काफ़ी सिग्निफिकेंट पुल बैक था जब भी प्राइस ट्रेंड कर रहा था टूवर्ड्स द अपसाइड। सो आई वांट टू सी दिस डिमांड टू बी sustain for Nifty to further go around 700 and 17,800 levels. Okay, so that's it for Nifty 50. Let's look at Bank Nifty. Bank Nifty निफ्टी 50 से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। ओके, बिकॉज ऑब्वियसली निफ्टी 50 वॉज ड्रिवन बाय अडानी। ओके, एंड बैंक निफ्टी में भी दो दो तीन SBI हुआ, LIC हुआ, LIC इज़ इन फाइनेंस, बट हाँ, दे वर ड्रैगिंग और स्टॉपिंग बैंक निफ्टी टू गो अप। बट yes,
Bank Nifty is stronger than Nifty 50, but if I want to take a buy trade, मैं technical wise, price action wise Nifty prefer करूँगा rather than trading Bank Nifty, because Bank Nifty पे उतना अच्छा खासा price action नहीं है and there is no enough space to move around. Okay, so Nifty 50 ज़्यादा suitable है to take a long trade. So what do I see on a Bank Nifty? First of all, there is a difference between a spot chart and future chart. Spot chart में कभी price action different रहता है as compared to the future chart, and as you can see ये लो याद रखना और ये हाई याद रखना, बट अभी फ़िलहाल के लिए लो याद रखना. नाउ ऑन अ डेली टाइम फ्रेम ऑन फ्यूचर चार्ट वी हैव ऑलरेडी टेकन आउट दिस लो. ओके, बट ऑन स्पॉट चार्ट वी हैवन टेकन आउट दैट लो. सो वो थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है इफ़ यू आर ट्रेडिंग बेस्ड ऑन लिक्विडिटी स्वीप और नॉट. व्हाट आई डू समटाइम इज़ कि मैं दोनों स्पॉट चार्ट एंड फ्यूचर चार्ट को देखना प्रेफर करता हूँ, स्पेशली ऑन बैंक निफ्टी, बिकॉज ज़्यादा बड़ा है वो एज़ कम्पेयर टू निफ्टी 50. ओके, सो यस, सो यहाँ पे भी आई विल डू माई एनालिसिस ऑन बैंक निफ्टी फ्यूचर चार्ट, नॉट ऑन spot chart. Okay, so on a future chart clearly liquidity sweep हुआ है. यहाँ पे we have a resistance which is buy side liquidity on a daily time frame which is around 42,000. Okay, so we are going towards the buy side liquidity, and again we if it breaks above by 42,128 and 42,100 levels, we again have a resistance around 43,000, which is अच्छा खासा 1,000 point का move है towards the upside. So let's look at 1 hour time frame. On a 1 hour time frame we have prices are making higher and higher highs and higher lows. That is really good for Bank Nifty until and unless one of this demand has been taken out. Okay, so जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि this is a gap, a huge gap in the market price, so I am expecting a pullback can happen anytime. So ये जो gap है, see gaps in Indian markets act as a support and resistance, because whenever there is a gap वो एक significant level को breach करता है price. Okay, so for an example यहाँ पे we have a demand zone, price broke below that demand zone. Okay, maybe वो time पे we had a retest on a 5 minute and then price continue going towards the downside. That means वो as a resistance act करेगा ही price को. Okay, so I want to see if this area holds or not. If it doesn't hold, पहले तो ये liquidity sweep होने दो, let it break this 1 hour demand zone. Okay, 15 मिनट की बात की जाए तो वी हैव अ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर. ऑलराइट, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर. अभी मैं डायरेक्टली चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद एंट्री लेना प्रेफर नहीं करता. आई एम नॉट एन एग्रेसिव ट्रेडर. आई लाइक टू वेट फॉर कंफर्मेशन. छोड़ो जाने दो, मुझे चलेगा इफ आई मिस फ्यू पॉइंट्स और फ्यू मच bucks in this particular trade. But yes, Bank Nifty is sometimes ज़्यादा losses करवा देता है, so that's why I prefer looking for a confirmation. So I will wait for a breakout structure, but breakout structure भी ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे inducement create हो. Okay, so for an example, if you have a breakout structure after a change of character, जब ये जो supply zone form होगा और fair value gap anything, there should be a gap in between that supply and the price. Okay, that means inducement create होना चाहिए for a better entry, because whenever we have a liquidity sweep after a breakout structure or a change of character before, then वो ज़्यादा अच्छा खासा confirmation देता है to take the trade. Okay, so अगर मुझे सेल ट्रेड लेना है तो दैट दिस विल बी एन आइडियल सिनारियो फॉर मी टू डू दैट. ओके, अभी ये इफ़ आई टेक अ शॉर्ट ट्रेड, मैं टारगेट कहाँ पे रखूँ? मैं टारगेट ये लो रख सकता हूँ या फिर ये ब्रेकर ब्लॉक इटसेल्फ जो ऑलरेडी रीटेस्ट हो चुका है, तो मे बी और मे बी नॉट वो होल्ड करे या ना करे. ओनली
future will tell us, or simply simple है कि use the 0.5% or discounted price as your target if you are taking a short trade. Okay, so yeah, that's it for today. And if you have any doubts regarding to anything, you can ask that in the comment section. And if you want to check my mentorship, click the link in the description. And see you guys in the next one. Bye bye, take care.